So we'll see the biotechnology and important points from biotechnology for your GPAT, Niper, Drug Inspector, Environment Pharmacist exam or any other kind of exam. So this biotechnology is more important for Niper exam than GPAT exam. So in the GPAT, they are only going to ask you only two or maximum three questions from this biotechnology. But in case of Niper, you can expect at least five questions from this biotechnology. And whatever is important, so that will be revised to you. So important points from biotechnology. What do you mean by biotechnology? So biotechnology is the applied subject and it is nothing but the application of your biochemical process or biochemistry in the for the welfare of human beings. So for example, if you want to use this technique, you can make a insulin using this recombinant DNA technology from the biotechnology. You can produce whatever you want, for example, different hormones, etc. etc. So somatic hybridization, by using somatic hybridization, plant tissue culture, you can produce hybrid plants. By using recombinant DNA technology, you can even produce hybrid animals. Okay, so black and white mouse, then dolly sheep, etc. So these are the examples. So it is nothing but the utilization of your basic processes, utilization of your biochemistry and physiological processes of your animals, microorganisms for the well-being of humans. So I'm not going to tell you in the details regarding biotechnology, the history and all that. So because seldomly they used to ask only two or three questions, so that's why I'm going to give more focus on whatever is important for your GPAT exam and other exam. So first I will in short I will just let you know the process of recombinant DNA technology. तो रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी का जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू मीन बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? So obviously recombinant means combination. Recombinant means what? Combination. Combination of DNA. Why you are doing combination of DNA? Because for the diagnosis purpose, for therapeutic purpose. For example, जैसे आपका लास्ट ईयर लास्ट 2 साल में कोरोना वायरस का बहुत चला था RT-PCR. There might you might have term RT-PCR. Okay, so what is the long form that RT-PCR? Long form is nothing but the reverse transcriptase polymerase chain reaction. So RT-PCR term you might have heard in the last 2 years, but you don't know the exactly what is. So we are going to see in the detail the PCR technique and all that. So RT means reverse transcriptase polymerase chain reaction, RT-PCR. Suppose that you have some kind of DNA. Suppose for example a DNA responsible for the insulin production or DNA responsible for the any hormone production. For example somatostatin, growth hormone etc. जो भी हार्मोन है उनका प्रोडक्शन के लिए क्या होता है कि एक डीएनए it is a sequence of recipe responsible for the production of certain kind of hormones, certain kind of genes, certain kind of your proteins etc. So whatever that gene is there, that gene is known as a DNA. Suppose आपके पास एक DNA है, that DNA is nothing but the responsible for the uh, production of insulin in your system, in your body. So now you are suffering from diabetes, and so it is a potential use of the DNA. By using the DNA you can produce a different protein that is responsible for the expression of this insulin in your body. ठीक है, जो प्रोटीन बनता है इंसुलिन क्या है? इंसुलिन इज नथिंग बट द हार्मोन, इट इज अ प्रोटीन इन नेचर. ओके, तो वहाँ पे कुछ अमीनो एसिड का चेन रहेगा, चेन ए चेन बी, 21 31, 21 and 32 like that. So that is nothing but the protein and that is produced by upon the stimulation of expression. जैसे आपका डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से बनता है प्रोटीन, that is known as a central dogma of life. So DNA making of multiple copies of DNA, that is known as a replication. So DNA daughter DNA, that is a replication, and from that DNA making of RNA is known as a transcription. So making of identical copy of DNA is known as a replication. Making of RNA from that DNA is known as a transcription, and making of protein or synthesis of proteins from that RNA is known as a translation. So replication, transcription, translation, that is known as a central dogma of life. So that part we will see in the biochemistry. So first you need to understand what do you mean by recombinant DNA technology. So recombinance combination means recombination. recombination करना है, किसका recombination? दो डीएनए का. ठीक है, कंबाइन क्या करते हो आप? दो प्रोडक्ट, दो दो चीज आपके पास होंगे, दो चीज. सो फर्स्ट फॉर एग्जांपल ए एंड बी, तो उनको आप कंबाइन कर सकते हो.
एक को सिर्फ कंबाइन नहीं कर सकते. So recombinant means what? Recombinant means combination of two. Which kind of two? These are nothing but the DNA. Two DNA, recombination of two DNA to produce a hybrid DNA. Combination of two DNA to produce a hybrid DNA. That is known as a recombinant DNA technology. Okay, this is a hybrid. So now donor cell, for example, this beta cell is the beta cells of Langerhans. Okay, you know that beta cells of Langerhans will produce a hormone known as insulin, responsible for the glucose utilization in your body. Now you have to isolate that beta cell. Okay, you have isolated that beta cell, for example donor beta cell. Now from that donor beta cell you have isolated the DNA, where DNA of interest, this DNA of interest. Now it is a very large in size, so it is a big size DNA. So you don't need a big size DNA, you need a small size DNA, small fragment of DNA. That is a fragment of interest, small fragment of DNA. Now this large size DNA can be broken down into smaller fragments by using different kind of enzymes known as a restriction enzymes, restriction endonucleases enzymes. There are different types of restriction enzymes. ये restriction enzyme के बहुत सारे types होते हैं, वो अलग we will see in our upcoming slides. But remember, restriction enzymes, these are nothing but the enzymes. They are responsible for the breaking or cutting of your DNA. So आपका जो भी DNA है, DNA of interest, वो cut करेगा कौन? Restriction enzymes. There are different kind of restriction enzymes. Now you cut the DNA into smaller pieces. You know that bacterial cell. Okay, मैंने आपको बोला था bacterial cell होता है. So in the bacterial cell you have two kind of genetic material. In the bacterial cell you have two types of genetic material. So first is nothing but the known as a chromosomal DNA, so which is responsible for the genetic makeup of bacteria. Bacteria का genetic makeup के लिए chromosomal DNA होता है, जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ. So that is known as a chromosomal DNA. Okay, and now this another DNA, another circular DNA which is not responsible for the genetic makeup of that bacteria. So extra chromosomal DNA. This circular extra chromosomal DNA is known as a plasmids. Okay, we have seen that. So these plasmids, they are self-replicating extra chromosomal DNA. Okay, circular self-replicating extra chromosomal DNA. ये DNA ही होता है, but this DNA is not responsible for the genetic makeup of bacteria. तो यहाँ पे याद रखो, तो ये DNA बैक्टीरिया के लिए ज़्यादा कुछ यूजफुल नहीं है. तो जो बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मेकअप है वो आपका जो क्रोमोसोमल डीएनए होता है. सो दैट इज अ लीनियर डीएनए. Chromosomal DNA of bacteria is nothing but the linear DNA. So that will decide shape, size, and all the metabolic reactions of your bacteria. So that is known as the chromosomal DNA or linear DNA. But in addition to that, your bacteria also has a circular DNA, okay, which is an extra chromosomal DNA known as a plasmids. Now whole recombinant DNA technology and almost 50% of biotechnology is based upon that vector. Okay, and this plasmid is used as a vector, extra chromosomal self-replicating DNA from the bacterial cell. Okay, so DNA of interest, this extra chromosomal DNA from bacteria. So you have to isolate this extra chromosomal DNA from bacteria by breaking the bacterial cell. Okay, okay, now this is known as a plasmid. Okay, this circular extra chromosomal DNA from bacteria known as a plasmid. Now this plasmid, you have to cut this plasmid. Okay, you have to cut this plasmid by using again restriction enzymes. So restriction enzymes cut this plasmid at a specific sequence. एक specific sequence होता है, जैसे उसको बोलते हैं palindromic sequence. So that restriction enzymes will break this plasmid at a palindromic sequence. Palindromic sequence मतलब क्या है? जहाँ पे repetitions होता है, ATGC सब repetitions होता है बेस पेयर का, जो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर से उसका रिपीटेशन जहाँ पे, that is known as a palindromic sequence. So this restriction enzyme breaks this plasmid as a palindromic sequence, and now you have this empty space in the plasmid. Now this DNA is inserted into this empty space. यहाँ पे जो empty space है उसमें ये DNA insert करना है. Now once you inserted the DNA, you have to close it. You have to stick it by using ligases enzyme. So ligases enzymes join the foreign DNA to the plasmid. Now whatever this plasmid is there, plasmid with your DNA of interest. Now this plasmid is with your this DNA. Okay.
ये DNA भी है इसमें. So this is known as a recombinant DNA. This is known as a recombinant DNA. Now this DNA is inserted into the bacterial cell. This DNA is inserted into bacterial cell. Now you know that this plasmid is nothing but the extra chromosomal self replicating DNA. वो self उसका replication होता है. Now your recombinant plasmid consists of your interest DNA of interest. तो यहाँ पे इंसुलिन प्रोडक्शन करने वाला जीन जो है उसका डीएनए यहाँ पे इसमें डाला है आपने. तो ये यहाँ पे बाद में फिर से बैक्टीरिया में डाल दिया आपने. तो इसका रोल क्या होता है कि ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग होता है. मतलब ये क्या करेगा, उसके मल्टीपल कॉपीज बनाएगा. सो होस्ट बैक्टीरियम विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन दिस स्टेप. ओके, नाउ दिस रेप्लिकेशन विल बी देयर. So clones of DNA. So this circular extrachromosomal plasmid, they will undergo self-replication in the bacterial cell and they will produce their identical copies. That means जो आपको प्लाज्मिड मल्टीप्लाई हो चुका है उसके साथ में आपका डीएनए भी मल्टीप्लाई हो चुका है. जो इंटरेस्ट जो डीएनए या फिर जो जीन आपने आइसोलेट किया था, ये जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन. तो इंसुलिन एक एग्जांपल लिया है मैंने, बाकी कौन सा भी ले सकते हो, इंसुलिन ये वो सब सोमेटोस्टैटिन हार्मोन्स वगैरह. So along with that plasmid your DNA also will be multiplied. DNA also will be multiplied. Now you can isolate your replicated DNA जो आपने identical copies बनाए हैं. Okay, so you can isolate. और this clones they undergo replication, transcription and translation. इसमें प्रोटीन भी सिंथेसिस कर सकते हैं. बाद में क्या करना है, बैक्टीरिया सेल को ब्रेक करके जो भी आपका प्रोडक्ट है जैसे एंजाइम होगा या प्रोटीन होगा, बिकॉज this extra chromosomal DNA consists of your DNA of interest. इसमें ये भी है, ये भी है. तो ये क्या करेगा, यहाँ पे बैक्टीरिया में मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो भी उसका काम है रेप्लिकेशन करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसलेशन करेगा. So obviously if this gene is present in this, so this bacteria will produce insulin in the cell. Now you just have to break this bacteria, you just have to digest this bacteria and you have to obtain a cell content and in that you have your इंसुलिन. ब्रेक करो उसको, देन आइसोलेट करो इंसुलिन. सो कॉलोनीज ऑफ genetically engineered bacteria in the medium, growth medium, consists of your recombinant product. Now after breaking of this bacterial cell you will get your product, you have to isolate there. So that is known as a downstream processing. So it is just an overview how there is a recombinant DNA technology. एक overview बोला है आपको. So process is same for each and everything. So I will explain this again. So this one is your donor cell or the cell in which there is a DNA of interest. So suppose that you want to produce insulin in a large scale. Nowadays whatever insulin you are getting in the market for diabetes treatment, so that is nothing but the recombinant DNA, insulin made by recombinant DNA technology. So that insulin is obtained from microbial source. Okay, so जैसे बोला है. So you have to isolate. Okay, so DNA from beta cells of Langerhans of humans. So you have to isolate the DNA, okay, and you have to cut that DNA into small pieces because you have to multiply that DNA into bacterial DNA, okay, so which is very smaller in nature. So you have to break that DNA into small pieces. You have to cut that DNA into small pieces by using restriction enzyme. There are different kind of restriction enzymes. So they cut the DNA at a specific sequence. So we'll see in upcoming slide. So you have your DNA of interest. Now you have one bacterial cell. Suppose that E. coli. Okay. Now this bacterial cell has a two kind of DNA. First one is known as a chromosomal DNA. So this is known as a linear chromosomal DNA, as you can see. Now this circular DNA. Okay, circular DNA is known as a extra chromosomal DNA. This circular DNA is known as a extra chromosomal self-replicating DNA. And they are known as a plasmids. Now you have to isolate these plasmids from bacterial cell, and once you isolate you have to cut this plasmid at a specific sequence. So that is done by restriction enzyme again. Okay, restriction enzyme break करेगा इस plasmid को. Now whatever restriction enzyme will break this plasmid and this plasmid will form two blunt ends. यहाँ पे जो ends है they are sticky in nature, means they can be easily ligated, they can be easily sealed. Okay, because that this restriction enzyme produces the fragment, okay, where it produces the sticky end. तो यहाँ पे मतलब बाइंड करने के लिए यहाँ पे sticky end मतलब यहाँ पे देखो अपोजिट टाइप के सीक्वेंस होंगे. So you have to insert this DNA of interest into the plasmid, okay, and you have to seal it by using ligase enzyme.
join, okay, this ligase enzyme joins foreign DNA to the plasmid. Now after that, so this recombinant plasmid you have to insert again into bacterial cell, that is known as a host bacterium with recombinant DNA. And after that, so you know that this is self replicating extra chromosomal DNA, so it will undergo replication, ये यहाँ पे उसका copies बनाएगा, so it will undergo replication to produce more copies, it will clone, okay, it will clone, it will make copies of, so you know that इसमें आपका DNA भी है, ये वाला, so obviously ये DNA जो भी है, ये वाला DNA भी वहाँ पे replication हो जाएगा, so it will produce multiple copies. Now अगर ये DNA यहाँ से multiply हो गया, अगर उसमें जो जीन है, जीन responsible for the production of insulin, so it will produce a protein after replication, transcription and translation. Now that protein you have to isolate. What is that protein? That is insulin. तो ये बैक्टीरिया ने क्या बनाया आपके लिए? इंसुलिन बनाया, क्योंकि आप बना नहीं सकते खुद से, आपके बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो चुके. So humans are very selfish in nature. They are using everything for their goodwill. तो जैसे अपने बुलाया, आदमी लोग बहुत कमीने होते हैं, सबको यूज करते हैं, जैसे बैक्टीरिया को भी छोड़ा नहीं है, बैक्टीरिया को भी यूज कर रहे हैं, प्लांट्स को भी छोड़ा नहीं है, धरती की कोई चीज भी छोड़ी नहीं है, सबको यूटिलाइज कर रहे हैं, सबका यूज कर रहे हैं. ऐसा there is no single thing on earth which is not used by human. मतलब जो मेटल आपके यूज के नहीं है उसको भी यूज कर रहे हैं, ठीक है. सो देर इज नो यूज ऑफ गोल्ड मेटल. जो गोल्ड होता है उसका क्या यूज है? कोई भी यूज नहीं, लेकिन उसको भी नहीं छोड़ा है, उसको भी गले में पहन के घूम रहे हैं. सिल्वर का थोड़ा बहुत बायोकेमिकल रोल होता है, बट गोल्ड का नहीं होता है. प्लेटिनम का तो होता ही नहीं रोल. देर इज नो रोल ऑफ प्लेटिनम इन केस ऑफ बॉडी, इन द biochemistry or biological or cellular level. So there is no role of platinum, but still people they are isolating the platinum from different ores and they are using, and it is very expensive metal. अगर गोल्ड रिंग लेने जाओगे आप तो वो थोड़ा सा सस्ता मिलेगा, लेकिन प्लेटिनम का रिंग बहुत ही महंगा होता है. सो माय पॉइंट बीइंग, humans are very selfish. Okay, they are using bacteria, they are using fungus, they are using each and everything for their benefits. Now whatever this insulin is produced inside the cell, you have to obtain this by breaking the cell, digesting the cell, and known as a downstream processing, separation and purification of product. So it is just overview of your recombinant DNA technology. Now we'll see in the detail what is important. Some therapeutic products of recombinant DNA technology. कि recombinant DNA technology से कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं आपको? तो सम थेरापेटिक प्रोडक्ट ऑफ आर डीएनए टेक्नोलॉजी. सो फर्स्ट वन इज इंटरफेरॉन. इंटरफेरॉन, यू नो दैट इट इज नथिंग बट द एंटीबॉडीज अगेंस्ट द वायरस. तो एंटीबॉडी जो नॉर्मल टर्म होता है एंटीबॉडी, दैट इज यूज्ड फॉर द प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी अगेंस्ट द पैथोजेनिक बैक्टीरिया. ओके, अगर कोई इन्फेक्शन हो गया बैक्टीरिया का, उसके अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी बनता है आपके बॉडी में, उसको बोलते हैं एंटीबॉडीज. इफ दैट इन्फेक्शन इज बिकॉज ऑफ द वायरस, अगर कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया तो उसके अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी बनता है आपकी बॉडी में, उसको बोलते हैं इंटरफेरॉन. नाउ इंटरफेरॉन इट इज नाउअडेज मेड बाय recombinant DNA technology and useful in the cancer and viral infection. Now human urokinase. So human urokinase is an enzyme, urokinase. There are two, urokinase, streptokinase. Both are known as a plasminogen activator. Tissue plasminogen activator. It is known as a tissue plasminogen. So they will activate the plasminogen. So that plasminogen will break down the fibrin thread. जहाँ पे आपका मायोकार्डियल इंफेक्शन में क्या होता है कि क्लॉट बन जाता है ब्लड का. So that to remove that clot, to break that clot, plasminogen activators are used. So urokinase, streptokinase, alteplase, etc., etc. We have seen in the when we were discussing about the blood and related products. So we have seen that when we were discussing about the coagulants and anticoagulants in a very first lecture. जैसे जब कोर्स चालू होता उसमें का पहला चैप्टर लिया था ब्लड, तो उसके सीक्वेंस में ये लिया था कोएगुलेंट एंड एंटीकोएगुलेंट. So at that time I have told you this urokinase, streptokinase, alteplase. So all these are known as tissue plasminogen activator. So they will break down the threads of fibrin. So plasminogen activator, they are used to dissolve the clots, blood clots in the small arteries or brain, or in case of myocardial infarction. So myocardial infarction में ये drug use करते हैं कौन से? Urokinase and streptokinase. Alteplase known as a tissue plasminogen activator, TPA. यहाँ पे लिखा है TPA.
TPA मतलब क्या है? Tissue plasminogen. Now it is nowadays produced by recombinant DNA technology. Now again human blood clotting factor 4, clotting factor for hemophilia. So it is also produced by recombinant DNA technology. जिसको हीमोफिलिया है उसका ब्लड क्या होता है? क्लॉट नहीं होता. मतलब जिसको those person who is suffering from hemophilia, if there is a cut, he will lose all the blood. So blood will not be clotted. That is known as a hemophilia. So to treat that, you have to give this human clotting factor 4 number 4. So actually it is not a factor number 4, it is a factor number 8. Okay, that is known as an anti-hemophilic factor. So that nowadays produced by recombinant DNA technology. Okay, then again tissue plasminogen activator, जैसे मैंने बोला है आपको ऊपर, urokinase, streptokinase, alteplase, so they are used in the treatment of heart attack. Nowadays they are also produced by recombinant DNA technology. I have listed only few important products. So there are a lot of products. Then lymphobolins, lympholines. Okay. So next is the lympholines. So it is used in the autoimmune, also produced by recombinant DNA technology. Serum albumin is also produced by recombinant DNA technology. So albumin क्या होता है? Albumin क्या होता है? It is a kind of protein. This protein is made by recombinant DNA technology, and it is used. So it is used in case of various kind of surgeries. Attenuated pseudo rabies and virus antigen. So attenuated pseudo rabies virus antigen. So now it is produced by recombinant DNA technology and useful as a vaccine against the rabies virus. तो attenuated मतलब क्या है? एक टर्म यहाँ पे मैं बोलता हूँ आपको. So what do you mean by attenuation? What do you mean by attenuation? Suppose that if any antigen is there, जैसे कोरोना वायरस का एंटीजन, जैसे कोरोना वायरस है, यहाँ पे ये रेबीज का भी वायरस होता है. क्या करना है कि आपको the part of virus that is responsible for the causing infection known as a epitopes, paratops and epitopes. So that part came in the contact with your system, so it will cause you disease. जैसे कोरोना का वायरस अंदर गया तो कोरोना हो जाएगा, रेबीज का वायरस अंदर गया तो रेबीज होता है, लेकिन वो वायरस नहीं करता. उसके ऊपर वायरस के ऊपर epitopes होते हैं. epitopes मतलब specific kind of protein. So that protein triggers the immune response. That protein, they are immunogenic in nature. Okay, now that protein is isolated and they are attenuated. Now what do you mean by attenuation? So attenuation means a removal of bad properties of that protein. Okay, responsible causing the disease. तो जिसकी कारण डिसीज होता है, जैसे रेबीज के वायरस के कारण रेबीज होता है, तो वायरस के ऊपर जो प्रोटीन होता है, the protein and the protein responsible for the causing rabies, so that protein is the bad property of that protein is removed, till that protein is having property to stimulate your immune response. तो अगर रेबीज का वायरस लाइव वायरस देंगे आपको, तो आपको यहाँ पे रेबीज डिसीज हो सकता है. तो रेबीज का वायरस जो है उसको एटेन्यूएट करते हैं. एटेन्यूएट मतलब उसके बैड प्रॉपर्टीज रिमूव करते हैं एंड ओनली immunogenic properties वहाँ पे keep करते हैं. So that is attenuation. Then again somatostatin. Somatostatin is used in the different disorders of growth. Somatostatin, recombinant somatostatin. और इंसुलिन का मैंने आपको तो बोल दिया. Insulin is also made by recombinant DNA technology. Now there is one more point, very important point. Polymerase chain reaction. Polymerase chain reaction. So polymerase chain reaction, PCR. What do you mean by PCR? Polymerase chain reaction. Polymerase मतलब क्या? It is a DNA polymerase enzyme. Chain मतलब क्या? Sequential. Reactions you know that. What is reaction? So polymerase chain reaction, it is a technique by which you can produce a millions of copies of DNA within a 2 minutes. So it is an in vitro technique in which there is a amplification of DNA. There is an amplification of DNA of interest to produce a billions of copies of DNA very short period, 1 or 2 minutes, by using heat stable DNA polymerase. By using heat stable DNA polymerase enzyme. तो normally क्या होता है कि enzymes they are not stable at a higher temperature. So most of the enzymes their working range of temperature is less than 40 degrees Celsius. तो 40 degrees Celsius के नीचे ही enzyme maximum उनका काम करेंगे. But there are certain enzymes. For example, this tag DNA polymerase. So this enzyme, the optimum temperature for working of this enzyme is around 72 degrees Celsius. तो वो मतलब optimum temperature है उसका. It is a heat stable DNA polymerase. Normally जो enzyme होते हैं वो heat stable नहीं होते.
Okay. So this PCR means polymerase chain reaction. It is again very important for your exam. So it is an in vitro technique. In vitro मतलब lab में. They result in the amplification of DNA of interest into a billions of copies of DNA in a within a 2 सेकंड और सॉरी विदिन अ 2 मिनट, 1-2 मिनट में आपको बिलियंस ऑफ कॉपीज मिल जाएंगे डीएनए के बाय यूजिंग दिस टेक्निक। तो देखो आरटीपीसीआर आपने टर्म सुना होगा आपने आरटीपीसीआर, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसका लॉन्ग फॉर्म होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एक एंजाइम होता है, उसका काम क्या है? सो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मोस्टली ऑकर्स इन द वायरस। जो एड्स का वायरस होता है, जो कोरोना वायरस होता है, एड्स के वायरस में भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। और उसका रोल क्या है? जैसे मैं बोला है आपको, so normally what happens in the central dogma of life, DNA will multiply, that is known as a DNA replication, produce its own copies, DNA replication, and after that replication DNA will make RNA, that is known as a transcription, and after that transcription proteins are synthesized from that RNA, known as a translation. This is known as central dogma of life. which are वायरस, which are RNA वायरस, जो वायरस जो है जिनका जेनेटिक मटेरियल सिर्फ RNA है, so those virus which will have only RNA as a ribonucleic acid as a genetic material RNA, so in that case how they can produce DNA? So from that production of DNA from RNA, so that is done by reverse transcriptase. So normal transcription क्या होता है कि DNA से RNA बनना, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन, बट यहाँ से RNA से DNA बन रहा है अपोजिट, दैट व्हाई नोन एज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. So reverse transcriptase is an enzyme that can produce DNA from RNA, and that occurs in the virus containing RNA as genetic material. तो ये कोरोना वायरस भी, उसका भी जेनेटिक मटेरियल RNA होता है. सो इसलिए आरटीपीसीआर मतलब क्या है कि उसके पास RNA है, वो RNA आइसोलेट करो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज करके उसका DNA बना, और बाद में वो DNA मल्टीप्लाई करो, और वो DNA अगर आपके ब्लड में आता है तो मतलब आपको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है, अगर नहीं है तो नहीं है. दैट इज अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर. व्हाट इज मीन बाय पीसीआर? लेट्स कम टू द अगेन. सो पीसीआर इज इन विट्रो टेक्निक of producing the millions of copies of DNA of interest in a 2 minute by using heat stable DNA polymerase known as a tagged DNA polymerase. Okay, so tagged DNA polymerase. So there are different kind of tagged DNA polymerase and their source. So we are going to see it in upcoming slides. So in vitro technique in which there is a result of amplification of DNA of interest into a billion copies of DNA by using heat stable DNA polymerase, that is a tagged DNA polymerase. Now what are the different heat stable DNA polymerase? So all these heat stable DNA polymerase requires one cofactor known as a magnesium. Now first one is a tagged DNA polymerase. Question इसके ऊपर आता है. So tagged TAQ DNA polymerase, tagged DNA polymerase. So it is obtained from A1 microbe known as a Thermus aquaticus. Thermus aquaticus. It occurs in the hot water ponds. यहाँ पे गर्म वाटर का झरना होता है, गर्म वाटर, तो हॉट वाटर पॉन्ड्स. सो उसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको बोलते हैं थर्मस एक्वेटिकस. सो इफ दैट बैक्टीरिया सर्वाइव्स अप टू 95 डिग्री सेल्सियस, तो बैक्टीरिया अगर 95 डिग्री सेल्सियस पे जिंदा रहता है तो उसका जो एंजाइम्स है वो भी तो 95 डिग्री सेल्सियस पे काम करेगा ना. सो ऑब्वियसली, so this DNA polymerase, tagged DNA polymerase is obtained from Thermus aquaticus bacteria which is stable up to 95 degrees Celsius. 95 डिग्री सेल्सियस के तक वो डीनेचुरेशन नहीं होता उसमें. सो टैग डीएनए पॉलीमरेज ऑब्टेन फ्रॉम थर्मस एक्वाटिकस. क्वेश्चन आ चुके, स्टेबल अप टू 95 डिग्री सेल्सियस. सो इट इज अ वन हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज. अनदर हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज इज नोन एज अ वेंट डीएनए पॉलीमरेज. इट इज ऑब्टेन फ्रॉम Micrococcus litoris. Okay, so it is obtained from Thermococcus litoralis. So vent DNA polymerase. ये इसी अगेन सेकंड टाइप. ठीक है, हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज के डिफरेंट टाइप्स होते हैं. तो टैग डीएनए पॉलीमरेज ऑब्टेन फ्रॉम थर्मस एक्वाटिकस स्टेबल अप टू 95 डिग्री सेल्सियस. वेंट डीएनए पॉलीमरेज ऑब्टेन फ्रॉम Thermococcus litoralis. Then PFU DNA polymerase, Fru DNA polymerase obtained from Pyrococcus furiosus. Pyrococcus furiosus. PFU DNA polymerase obtained from Pyrococcus furiosus. Okay, PFU DNA polymerase, Pyrococcus furiosus. You have to remember these names because they can ask question, and is again stable over 95 degrees Celsius.
तो नॉर्मली जो एंजाइम्स होते हैं वो 40 के नियर अबाउट 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही एक्टिव होते हैं, उसके आगे उसका डीनेचुरेशन हो जाता है. बट देयर आर सर्टन बैक्टीरिया who can survive in the hot water. For example, in a hot ponds, that are bacteria known as Thermus activaticus, and tag DNA polymerase is isolated from that Thermus activaticus, which is developed to 95 degrees. Question इसके ऊपर डायरेक्टली 2-3 बार आ चुका. Now, what is the reaction mixture for polymerase chain reaction? डिटेल में थोड़ा सा नहीं ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे डिटेल में जरूरत नहीं है. So reaction mixture for polymerase chain reaction. So what will be the reaction mixture? तो यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए उसमें, ठीक है. तो सबसे पहले तो आपको जो डीएनए का मल्टीप्लाई करना है, सो डीएनए ऑफ इंटरेस्ट. ओके, सो फर्स्ट विल बी डीएनए ऑफ इंटरेस्ट, देन प्राइमर मींस इट इज अ शॉर्ट फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, शॉर्ट फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए टू स्टार्ट योर रेप्लिकेशन, दैट इज नोन एज अ प्राइमर. पहले तो आपका डीएनए ऑफ इंटरेस्ट आ गया, दूसरा होता है प्राइमर, शॉर्ट फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, देन थर्ड आ गया आपका हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, दैट इज नोन एज अ टैग डीएनए पॉलीमरेज. ओके, देन फोर्थ क्या रहेगा रिएक्शन मिक्सचर में, न्यूक्लियोटाइड बेसिस. अगर न्यूक्लियोटाइड बेसिस एडेनिन गुआनिन थाइमिन साइटोसिन वो नहीं रहेगा तो वो फिर डीएनए एलोंगेशन कैसे होगा, डीएनए मल्टीप्लाई कैसे होगा. रिमेंबर द रिएक्शन मिक्सचर ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंटेंट ऑफ रिएक्शन मिक्सचर of polymerase chain reaction. Remember there are four content. First, DNA of interest or DNA fragment, then primer which is a very short fragment of DNA again, then primer means वो उसमें base sequence होता है, जैसे initially 5-10 base का sequence रहेगा, so it will join to your DNA of interest and will start replication. Primer, third is a heat stable DNA polymerase, that is tag DNA polymerase, and fourth content is nothing but the base pairs, that is adenine thymine guanine cytosine, ATGC, adenine thymine guanine cytosine. So once you got of this mixture, there is a one, यहाँ पे एक मिक्सचर अगर आपने ले लिया तो उसके बाद में एक एपरेटस होता है, उसका एक इंस्ट्रूमेंट होता है पीसीआर, उसमें सिर्फ आपको रखना है और उसको साइकिल चलाना है. उसका सीक्वेंस हो गए के बाद आपको बिलियंस ऑफ कॉपीज मिलेंगे. आपने इनिशियली एक कॉपी लिया है डीएनए का, इनिशियली यू आर टेकन ओनली वन डीएनए, वन कॉपी ऑफ डीएनए. इनिशियल में क्या है, डीएनए ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या है, आपका जो डीएनए फ्रैगमेंट है वो, तो जब एट द एंड ऑफ दिस पीसीआर यू विल गेट अ मिलियंस कॉपीज ऑफ दिस डीएनए. तो पीसीआर यूजेस एक्सपोनेंशियल सिंथेसिस ऑफ डीएनए टू रेज टू एन, मतलब फॉर ईच साइकिल. पहले साइकिल में क्या है कि आपका एक डीएनए, तो पहले साइकिल में क्या बनेगा उसका 2 डीएनए, अगर फिर से आपने साइकिल रिपीट किया तो 2 का कितना बनेगा 4 डीएनए. ये 2 रेज टू, ये पहली स्टेप में उसका मल्टीपल 1 का 2 बनेगा, दूसरे स्टेप में 2 रेज टू 2 4 बनेगा, तीसरे स्टेप में 4 raised to 2 16 मतलब 16 बनेगा. So there is a exponential synthesis of DNA in this polymerase. Now applications of PCR. So it is used for the diagnosis of pathogen. जैसे मैंने बोला है कि RT-PCR टेस्ट करते हो आप to check the antigen whether that coronavirus antigen is present in your body or not. So to diagnose the pathogen. Okay, diagnosis of mutations. अगर आपके जीन में कोई म्यूटेशंस हो गए, कुछ चेंजेस आ गए तो उसके लिए पेरेंटल डायग्नोसिस, मतलब माँ का दूध पिया है तो आ जा, एक बाप की औलाद है तो आ जा, तो आपका पापा कौन है वो कैसे करे समझ में आएगा, बाय यूजिंग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. ओके, सो मोस्टली पेरेंटल डायग्नोसिस, पीसीआर इज आल्सो यूज्ड फॉर पेरेंटल डायग्नोसिस इन केस ऑफ फोरेंसिक साइंस. तो जैसे आपने क्राइम पेट्रोल देखा होगा, चलो डीएनए के लिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए भेज दो. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे करते हैं कि वहां से क्राइम सीन से कुछ हेयर्स या फिर कुछ भी आइसोलेट करते हैं, हेयर्स या फिर ट्रेसेस, कुछ नाखून के अंदर कुछ स्किन के ट्रेसेस या फिर जो भी है वहां पे वो आइसोलेट करते हैं, उसका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करते हैं, पीसीआर करते हैं, ताकि उसके बिलियंस ऑफ कॉपीज बन जाए. एंड आफ्टर दैट दे यूज्ड टू फाइंड द करेक्ट मैच, इसने किया है क्राइम उनको समझ में. also used for the parental diagnosis, also used for the crime and all the research, molecular archaeology, DNA fingerprinting and diagnosis of plant pathogen. So those are the different applications of polymerase chain reaction. So if you want to read in the detail, you can read from books, but whatever is important I have listed here. So these are the applications of PCR technique. Now what is meant by RT-PCR? So synthesis of DNA from RNA. Already I have told you, synthesis of DNA from RNA by using reverse transcriptase and then amplification of that synthesized DNA. Then there are different types of this PCR. PCR टेक्निक के टाइप्स होते हैं, जैसे फर्स्ट हो गया आपका RT-PCR.
सेकंड टाइप क्या है इसका, आर्बिटरी प्राइम्ड पीसीआर, आर्बिटरी प्राइम्ड पीसीआर, एपीपीसीआर, arbitrary primed PCR. It is used. It uses a small primer known as arbitrary primer. तो इसमें एक अलग काइंड का प्राइमर होता है, that is around 10 to 15 बेस पेयर का एक प्राइमर होता है. अगर वो प्राइमर यूज करके पीसीआर किया तो उसको बोलेंगे ओके, इसको बोलेंगे आर्बिटरी प्राइम्ड पीसीआर, आरटी-पीसीआर, नॉर्मल पीसीआर, ये टाइप्स होते हैं. Now what are the steps involved in the PCR? So there are three steps. First one is known as denaturation, second one is known as annealing, and third one is known as elongation or polymerization. So what is the denaturation? तो जैसे ही आपने रिएक्शन मिक्सचर लिया, क्या क्या लिया, आपका डीएनए ऑफ इंटरेस्ट, देन प्राइमर, देन हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एंड बेस पेयर्स, ये आपका रिएक्शन मिक्सचर है. सो रिएक्शन मिक्सचर ले लिया आपने, अभी आपको पीसीआर करना है, पीसीआर टेक्निक, टेम्परेचर साइकिल. तो फर्स्ट denaturation, first step is nothing but the denaturation. So you have to increase the temperature of that reaction mixture up to 94 to 95 degrees Celsius for 15 seconds. 15 सेकंड में उसको क्या हो जाएगा, ड्यू टू इंक्रीज द टेम्परेचर व्हाट विल हैपन, डीनेचुरेशन, और दैट इज द सेपरेशन ऑफ टू स्ट्रैंड. डीएनए क्या है आपका, डबल स्टैंडर्ड डीएनए. तो डबल स्टैंड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए. So the double stranded DNA will be opened and it will be converted into single stranded DNA in the, so that is known as the temperature is known as a denaturation. So इसका temperature कभी कभी पूछ लेता है. So very important. There are different steps of PCR. First one is a denaturation, second one is annealing, and third one is elongation or polymerization. So in the first step, reaction mixture is heated up to 94 to 95 degrees Celsius for 15 seconds so that your DNA strands will be separated. डबल स्टैंडर्ड डीएनए का डबल स्टैंडर्ड डीएनए का स्ट्रैंड सेपरेट हो सके, इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज करना है. दैट्स व्हाई डीनेचुरेशन. नाउ सेकंड स्टेप इज एनीलिंग. एनीलिंग मतलब टू बाइंड. एनीलिंग मतलब क्या, टू बाइंड और लाइक टू. सो इन केस ऑफ एनीलिंग यू हैव टू डिक्रीज द टेम्परेचर, you have to decrease the temperature of reaction mixture up to 45 to 55 degrees Celsius for 62 seconds so that the जो प्राइमर है आपके रिएक्शन मिक्सचर में, so that the short primer will bound to two separate single stranded DNA. तो आपका जो पहला डीएनए था डबल स्टैंडर्ड था, तो आपने उसको हिट किया 95 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसका सेपरेशन हो गया. तो अभी सिंगल स्टैंड है, दो स्टैंड. So that primer will bind to a particular end of your single strand DNA. Now third step is the elongation or polymerization. So again you have to increase the temperature or you have to maintain the temperature at 72 degrees Celsius for 1 to 2 minutes. Now this is the optimum temperature for your tag DNA polymerase. Now tag DNA polymerase क्या करेगा, it will cause polymerization of that single strand DNA. जो single strand DNA है तो उसका polymerization, it will make a complementary strand. तो एक स्टैंड है उसके अपोजिट में, उसके अपोजिट बेस पे रख के वो नया वाला स्टैंड पाएंगे. तो मतलब आपका एक डीएनए है डबल स्टैंडर्ड, पहले उसको ब्रेक करो, सिंगल स्टैंडर्ड करो, बाद में प्राइमर अटैच करो, बाद में आपका पॉलीमरेज का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है उसको टेम्परेचर पे लेके जाओ और वो पॉलीमर प्राइमर को इलोंग करेगा. इट विल कॉज इलोंगेशन एट द प्राइमर एंड सो दैट यू विल फॉर्म ए टू कॉपीज ऑफ डीएनए. फ्रॉम one DNA you will get two copies of double stranded DNA. That is nothing but the polymerase chain reaction. So remember these three steps: denaturation, annealing, and elongation. So if you want in very detail, I can explain you, but there is no need. Now different enzymes used in the recombinant DNA technology. Different enzymes used in the recombinant DNA technology. First one is alkaline phosphatase. तो ये एंजाइम है अल्कलाइन फॉस्फेटेज. इसका रोल क्या होता है आरडीएनए टेक्नोलॉजी? इट रिमूव्स द फॉस्फेट फ्रॉम 5' end of double stranded or single stranded DNA or RNA. तो हर एक एंजाइम का रोल भी पूछ लेता है आपको. व्हाट इज द रोल ऑफ DNA ligase in case of RDNA technology or not? So alkaline phosphatase, what is the role? It remove the phosphate from 5' end of double stranded or single stranded DNA or RNA जो भी है. Then DNA ligase, what is the role of ligase? Ligase means to join, to bind. Okay? So DNA ligase means so used for joining the sugar phosphate backbone of the double stranded DNA with 5' phosphate and 3 hydroxyl group in the ATP dependent. Okay, it is a ATP dependent. Now for the joining, two DNA strand must be blunt or complementary to each other so that it will join. तो जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड है वो होने चाहिए, जो ब्लंट जो आप कट हुआ है वो जो कट है और जो आप डाल रहे हो वो कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, तभी जाके ज्वाइन हो जाए.
So DNA ligase joining of sugar phosphate backbone of the double stranded DNA with the 5-hydroxyl phosphate and 3-hydroxyl in, and it is the enzyme which is ATP dependent. Two ends of DNA must be blunt or complementary to each other for joining purpose. Now third enzyme is DNA polymerase first. So what is the role of this DNA polymerase first in the rDNA technology, recombinant DNA technology? Synthesis of DNA on complementary strand in the direction of 5' to 3'. Question as it is asked. So DNA polymerase 1 will synthesize the complementary DNA in which direction? DNA polymerase will synthesize the DNA on complementary strand at the 5' to 3' end. ये याद रखो 5' to 3' end. Exonuclease 3. So nucleases, these are the family of enzyme digest the nucleic acid. So it is used to digest the double stranded DNA at 3' end non of a linear DNA. तो जो DNA है आपका 3' end वहाँ पे 2 end होता है 3' 5' end. So this exonucleases they will digest DNA, that is double stranded DNA 3' end. Now another enzyme mung bean nuclease. So it will also digest the double stranded DNA or RNA but leaves intact. It will digest the only single stranded DNA. तो ये एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए को डाइजेस्ट करता है. मूंग बीन डीएनए सिर्फ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए को ही डाइजेस्ट करता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को डाइजेस्ट नहीं कर सकता. देन न्यूक्लिएजेस S1, so it behaves as a मूंग बीन न्यूक्लियस and digest opposite to nick on complementary strand. ये सिर्फ opposite direction में डाइजेस्ट करता है. Now polynucleotide kinase. So it causes the addition of hydroxyl group at the end of, okay, it causes the addition of 5' hydroxyl end the double stranded DNA or RNA, and it is again ATP dependent. Restriction endonucleases, इसके बारे में क्वेश्चन आता है. So what is the use of this restriction endonucleases enzyme? So it cuts the both end of DNA at a symmetrical recognition site. So it is known as a palindromic sequence. तो palindromic sequence भी बोलते हैं. And result into sticky or blunt end. Give cuts to your DNA. Restriction endonuclease they will cut your DNA. यहाँ पे आपका जो DNA फ्रैगमेंट है उसको कट करेगा, लेकिन कहीं पे भी कट नहीं करेगा. तो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के ऊपर कट करेगा. कौन सा सीक्वेंस? उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल रिकॉग्निशन साइट और पैलिंड्रोमिक साइट, जहाँ पर रिपीटेशन होता है. तो at that time site it will cause cutting. Restriction endonuclease. Then reverse transcriptase आपको बोला है synthesis of DNA from RNA, also known as RNA dependent DNA polymerase. So restriction reverse transcriptase is also known as RNA dependent DNA polymerase. So it will synthesize the DNA from 5' to 3' tagged DNA polymerase. So it is obtained from Thermus aquaticus developed to 95 degrees Celsius and operates optimum temperature is 30. Optimum temperature is 72 degrees Celsius. It is used in the polymerase chain reaction. These are the different enzymes. Very important, you have to remember the enzyme and its role. तो एंजाइम कौन सा है, उसका रोल क्या है, वो क्या काम करता है, उसके बारे में क्वेश्चन आता है. Now various types of restriction enzymes and their microbial source. क्वेश्चन इसके ऊपर भी आता है. तो कितने टाइप के restriction enzymes होते हैं? Various types of restriction enzymes and then microbial source. Okay, so restriction enzyme, microbial source. So first one is known as a BAM-HI. क्या नाम है इसका? BAM-HI. So it is a restriction enzyme obtained from Bacillus amyloliquefacin. Bacillus amyloliquefacin H. So BAM-H, Bacillus amyloliquefacin H. तो ऐसा याद रख सकते हो, BAM, Bacillus amyloliquefacin. B for Bacillus, A for Amylus, H1 that is for H. Then another is there. तो ये एंजाइम कहाँ पे कट करता है उसका भी सीक्वेंस होता है. So each and every restriction enzyme they will have a specific sequence where they will cut the DNA. That is not much important. आपको सिर्फ नाम याद रखना है. Then BG second. So it is again restriction enzyme obtained from Bacillus globigi. Bacillus globigi.
और Bacillus globigi. So B for Bacillus, G for globigi. Bacillus globigi 2. Then eco RI. Eco RI. So eco मतलब E coli. Eco मतलब E coli. RY13. So eco RI is a restriction enzyme obtained from Escherichia coli RY13. RY13 मस्त ये RY जो है that is a names of scientist. इन्होंने जिसने ये eco RY का इन्वेंट किया था, जिसने खोज किया उसका नाम है RY. And this 13 is nothing but the strain. So eco RY obtained from Escherichia coli RY13. Eco R2. Eco R. So it is obtained from E. coli R245 strain. Then Hind2. Hind2 मतलब H for Haemophilus, I for influenza. So Haemophilus influenza. Okay. RD is nothing but the name of scientist. So Hind2 is obtained from Haemophilus. Hind2 restriction enzyme is obtained from Haemophilus influenza. Remember. Okay. Now next one is HPA1. So H for again Haemophilus and PA for para-influenza. PA for para-influenza. So it is obtained from Haemophilus para-influenzae. It is obtained from Haemophilus para-influenzae. तो सिंपल है, आप नाम से ही आप उसको याद रख सकते हैं. अगर वो आप ऑप्शन में भी आ गया तो आपको इजीली क्लिक होना चाहिए. तो ऐसा बाम मतलब क्या है? B for Bacillus, A for amylolipidations and H for amylolipidations H. BG मतलब क्या? BG सेकंड. B for Bacillus, G for globin. Eco RI मतलब क्या? Eco मतलब E. coli, RI मतलब ओके Escherichia coli, RI मतलब क्या? जो साइंटिस्ट का नाम है R, उसका फर्स्ट इनिशियल एंड स्ट्रेन क्या है 13, तो उसका 1. तो इको RY, इको R1, इको R2 क्या है? E. coli R245. हिंड कहाँ से आता है? Hind2. Hind2 is nothing but the Haemophilus influenza. Obtained from Haemophilus. HEPA1, HPA1. So Haemophilus PA for para-influenza. Then next one is the PST1. PST1. So it is obtained from Providencia stewarti. Providencia stewarti. P for Providencia, S for ST for Stewarti. So Providencia stewarti. It is a kind of restriction enzyme. Then again second, SA2 कहाँ से आता है? ये से. So Streptomyces albus G is obtained from Streptomyces albus G. S for Streptomyces and A for others. ये से second, ये से SAL1. Okay, not SAL1. SAL1 is the restriction enzyme obtained from Streptomyces albus G. SAL1. Okay, SAL1. Then SAU3AI. SAU3A1. SAU3A1. It is obtained from Staphylococcus aureus 3A1. SAU मतलब क्या? Staphylococcus. AU is for Staphylococcus, AU for aureus and 3 for 3A1. Okay? So ये स्ट्रेन है Staphylococcus aureus 3A1. उसका जो स्ट्रेन है वहां से मिलता है SAU3A1. Then Nocardia otiditis carviaris. Nocardia otiditis carviaris. That gives the not one restriction enzyme. And last restriction enzyme is nothing but the KPNI. So K for Klebsiella and P for pneumonia. Okay, so KPN1 is nothing but the obtained from Klebsiella pneumoniae. Okay, so these are the different restriction enzymes. तो इसके ऊपर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है ये कौन सा एंजाइम कहाँ से मिलता है. याद रखो मैक्सिमम नाम में ही सब कुछ है. बैक्टीरियल एंड प्लांट क्लोनिंग वेक्टर्स क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है जीपैट में. बैक्टीरियल एंड प्लांट क्लोनिंग वेक्टर्स. सो व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर? वेक्टर मींस any tool or any agent that will transfer your DNA of interest into bacterial cell. तो आपका जो डीएनए आपको मल्टीप्लाई करना है बैक्टीरिया में, वो डीएनए कौन लेके जाएगा? उसको बोलते हैं वेक्टर. तो वेक्टर मींस it is an agent, it is a tool which can transmit your DNA into bacterial DNA. So what are the different vectors? So they are either animal vectors and plant vectors. Plant के लिए अलग vectors होते हैं, animals के लिए अलग vector होते हैं. So animal vectors they are either plasmid, cosmid, yeast artificial bacterial vector etc. Plant vectors में दो type आता है, RI plasmid, TI plasmid. So we'll see it in upcoming slide. So vector is another DNA molecule which is available and that may replicate in the transformed host cell known as a vector. So it is a DNA in which desired DNA to be inserted. तो vector क्या है? It is another
Okay, vector is another DNA molecule which is available that may replicate in the transformed host cell, that is known as a vector, and it is a DNA in which our desired DNA to be inserted. Now, properties of cloning vector, ideal properties of cloning vectors, ideal properties of cloning vectors. So this was the question in GPAT 2018. So what should be the properties of cloning vector? Cloning vector में क्या क्या होना चाहिए? ठीक है, first must have origin of replication, must have ORI sequence. Okay, so ideal vector must have origin for replication. So must have origin of replication site, that is a ORI sequence for the replication in the host cell. That is the first requirement. Second requirement is must have marker gene for selection. तो आपको मतलब जो आपने जो वेक्टर में डीएनए डाल के अपने बैक्टीरियल सेल में डाला, पर आपको क्या आंख से थोड़ी दिख रहा है कि वो बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म है या नहीं है. So to check that, there must be a marker genes in your vector. So that is antibiotic resistance genes. For example, this ampicillin resistance gene, then kanamycin resistance gene, and tetracycline resistance gene. AMPR मतलब ampicillin resistance gene, KANR मतलब kanamycin resistance gene, and TER मतलब tetracycline resistance gene. तो आप जब मीडिया में आइसोलेट करोगी तो जो जीन इसमें है, अगर आपके ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया में ये जीन रहेगा, कौन सा, एम्प्लिसिलिन, कैनामाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन. तो एंड अगर आपने मीडिया में ग्रो किया उसको और उस मीडिया में टेट्रासाइक्लिन डाल दिया, तो उसमें सिर्फ वही बैक्टीरिया ग्रो करेंगे जो ट्रांसफॉर्म रहे. तो जिसमें ये जीन रेजिस्टेंस जीन है, तो एम्प्लिसिलिन रेजिस्टेंस, कैनामाइसिन रेजिस्टेंस, tetracycline resistance. So these features, they are incorporated into a vector, so that you can identify whether your cells are transformed or not. Then third property of your cloning vector. So third point of ideal cloning vector, it should have cleavage site. It should have cleavage site or restriction site, so that restriction enzyme will cut on that site. Then multiple cloning sites, then polylinkers and promoters. So ये भी होना चाहिए इसमें. Then they must have control system like promoters, terminators, ribosome binding sites, so that DNA expression may be, so that DNA expression is properly. So these are the properties of ideal cloning vector. तो एक बार फिर से बोलता हूँ. So must have ORI sequence, must have marker genes, that is antibiotic resistance genes, then must have restriction site, then must have promoters, linkers, polylinkers, cloning sites. They must have promoters, terminator, ribosome binding sites. These are the properties of ideal cloning vectors. We'll see it again. So ideal cloning vector is denoted like this. ये आपके सामने एक vector का example है. So sequence is circular vector is there. It is known as a plasmid vector. Extra chromosomal DNA, circular extra chromosomal DNA obtained from bacteria, known as a plasmid vector. Okay. इसमें क्या क्या रहेगा? So इसमें क्या होना चाहिए? Okay. Now DNA of interest, आपका जो DNA of interest, वो इसमें डालना है. कैसे डालेंगे? So how would that get here? Okay. So how would that DNA of interest will be there in this vector? So by using restriction enzyme, this restriction enzyme, they cut at a specific site. restriction enzyme क्या करेंगे? यहाँ पे कट देंगे, यहाँ पे कट देंगे. तो ये जो blunt sites है, ये जो empty site है, इसमें आप DNA डाल सकते हो. So your ideal vector should have origin of sequence, ORI sequence. So origin of replication. Okay, so that your DNA, whatever DNA of interest is inserted, that will start replication because of this ORI sequence. Now replication होने के बाद में, how could you know that this is our transformed vector or it is a normal vector? So it can be identified on the basis of, okay, how do I know that cell I am growing actually contain vector. आप जो सेल ग्रो कर रहे हो उसमें वेक्टर आपका है, ट्रांसफॉर्म वेक्टर है या नहीं, आपको कैसे मालूम होगा? ड्यू टू सिलेक्शन ऑफ मार्कर, एंटीबैक्टीरियल रेजिस्टेंस जीन, जैसे यहाँ पे लिखा है, इज फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन रेजिस्टेंस जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस और कैनामाइसिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस. तो जो मान लीजिए कि आपने ये किया, आइसोलेट किया प्लाज्मिड, उसमें आपने एक आपका जो डिजायर्ड डीएनए वो भी डाल दिया, उसके बाद में वो प्लाज्मिड आपने बैक्टीरिया में डाल दिया. तो आपको कैसे मालूम कितने बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हुए, कितने बैक्टीरिया में आपको वेक्टर गया है? तो हाउ कुड यू नो दैट?
तो पहले ही वेक्टर में क्या करते हैं कि पहले ही वेक्टर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन डाल देते हैं। जैसे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन डाल दिया आपने वेक्टर में, उस जिस वेक्टर में आपने डीएनए डाला है, और वो वेक्टर आपने बैक्टीरिया में डाल दिया, बैक्टीरिया को ग्रो करेंगे आप मीडिया पे कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन सॉल्यूशन। तो टेट्रासाइक्लिन का एक डाइल्यूट सॉल्यूशन रहेगा उसमें मीडिया में, तो उस मीडिया में वही बैक्टीरिया ग्रो होंगे जिसमें ये वेक्टर आया है। अगर जिसमें ये वेक्टर नहीं है तो वो ग्रो नहीं होंगे, क्योंकि इस वेक्टर में क्या है, tetracycline resistance gene है. So those bacteria which consist of this vector, they will have a resistance to the tetracycline. So they will grow on that. Okay, so that you can easily transform, you can easily identify. So for identification purpose, tetracycline resistance gene, kanamycin resistance, and penicillin resistance gene are used. So question इसके ऊपर आ चुका है. Then we will see the next. We'll take up to then different types of vectors. So plant vectors. First one is the plant vectors. Sorry, first one is the animal vectors. तो animal vector में कौन से vector आते हैं? Animal vectors. So first one is the animal vectors. In that you have two kind of vectors. First one is the plasmid vectors, and second one is known as the cosmid vectors. Plasmid vectors and cosmid vectors. So what are the plasmids? Plasmids are nothing but the self-replicating extra chromosomal DNA from the bacterial cell. We already seen. So different vectors and this. So first is the PACY177. PACY177. So in that, what is P? P is nothing but the P for plasmid. Now capital letter AC is nothing but the initials of scientist who invented that, and this numerical 177 is nothing but the bacterial strain. Now PACY177 is obtained from E. coli. In the similar way, PBR322, PBR322, PBR324, PMB9, and PRK646. So all these are obtained from E. coli. Now third one is PC194, PSA 0.01. So obtained from PC and PSA. So जो SA है PSA. So you can see P means plasmid, P means SA means Staphylococcus aureus. So it is obtained from Staphylococcus aureus and Staphylococcus aureus. Okay, ये C के बारे में. Then next one is the PBS1. It is obtained from Bacillus subtilis. P means plasmid, B means Bacillus, S means subtilis. Then cosmid vectors. So cosmid, they are hybrid vectors in between bacteriophage vectors and plasmid vectors. तो plasmid का भी कुछ प्रॉपर्टीज रहेगा उसमें, लैम्बडा फेज वेक्टर जो होता है उसका भी कुछ प्रॉपर्टी रहेगा, ऐसा फ्यूजन करके कॉस्मिड बनाते हैं. सो उसमें आता है आपका उसका एक ये रहता है फीचर, दैट इज अ कॉस साइड. सो कॉस्मिड वेक्टर विल हैव कॉस साइड. फॉर एग्जांपल PJC74, PJC720 plasmid from PH79, PHC79 derivative of PBE320. Okay, then third kind of vector is nothing but the viral vector. Okay, this type third kind of vector is a viral vector. So that is the lambda phase vector, or it is also known as a phase vector or bacteriophage. So when virus will attack on a bacteria, so that is nothing but the bacteriophage. Okay, so जैसे वायरस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है, तो वायरस क्या करता है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो उसके बैक्टीरिया के सेल में डाल देता है. तो ऑटोमेटिकली वेक्टर का काम वही है. So vector is nothing but doing same thing what virus is doing with the bacteria. So they are utilizing the bacteriophage whole itself. So when bacteria attack the virus, that is known as the bacteriophage. So you have different viral the lipid phase vectors like SV40. So in that mammalian cells are there, M13 and lambda phase vector. So E. coli cells, मतलब ये E. coli सेल के ऊपर अटैक किया हुआ है वायरस ने अटैक किया E. coli सेल के ऊपर, तो लैम्बडा फेज वेक्टर मिल जाएगा M13 और लैम्बडा फेज वेक्टर. So if virus attack on mammalian cell, so then you will get this SV40 vector known as the plant vectors. Now next one is the animal. Okay, next one is the artificial chromosome vectors. So plasmid vectors, cosmid vectors, then viral vectors, and then artificial vectors or artificial chromosomes. तो चार टाइप के एनिमल वेक्टर्स होते हैं. ये एनिमल का ही चल रहा है. So इसमें आता है आपका ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, and this is the vector east artificial chromosome vector where you can incorporate highest amount of DNA. तो क्वेश्चन आ सकता है highest amount of DNA that can be incorporated into one of the following animal vector. So उसमें देंगे आपको प्लाज्मिड, कॉस्मिड्स, लैम्बडा फेज, ईस्ट आर्टिफिशियल वेक्टर.
So it is artificial chromosome. So it is the vector where you can impart large amount of DNA. So I think 35 to 50 base pairs. So in the artificial vector you have another one known as a bacterial artificial chromosome (BAC). YAC means yeast artificial chromosome. Yeast means fungus. Yeast artificial chromosome. Bacterial artificial chromosome means okay, the bacteria. Large amount of DNA that can be incorporated into vector, that is a yeast artificial vector याद रखो. Now plants vectors. ये हो गए एनिमल वेक्टर. एनिमल में आता है आपका प्लाज्मिड, कॉस्मिड, लैम्डाफिल और वायरल वेक्टर एंड देन आर्टिफिशियल वेक्टर्स, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स. लास्ट में आता है आपका प्लांट वेक्टर्स. प्लांट के लिए कौन से वेक्टर यूज करेंगे? देयर आर टू वेक्टर्स. फर्स्ट वन इज नोन एज टी आई प्लाज्मिड एंड सेकंड वन इज नोन एज आर आई प्लाज्मिड. टी आई प्लाज्मिड मतलब है टी फॉर ट्यूमर, आई फॉर इंड्यूसिंग, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड. आर आई मीन्स R for root and I for induction. So it induces hairy root disease. तो ये नाइपर के लिए इम्पोर्टेंट है, आपके क्वेश्चन आता है. तो TI plasmid, so isolated from Argobacterium tumefaciens and causes tumors to the plant, causes crown gall disease. क्वेश्चन as it is उसके ऊपर आ चुका है, तो याद रखो आपको. TI plasmid will cause crown gall disease. TI plasmid will cause crown gall disease to the plant. Now RI plasmid is again root inducing plasmid. So there is one again, it is obtained from Argobacterium rhizogens, causes the hairy root disease, hairy root disease in the plant. तो TI plasmid क्या करेगा? Crown gall disease करेगा, crown gall disease. And RI plasmid क्या करेगा? Hairy root disease, hairy root disease. याद रखो इसको. Properties of TI and RI plasmid. ओके, नॉर्मली ये बैक्टीरिया होता है Argobacterium tumefaciens, तो वो क्या करता है? क्राउन गॉल डिसीज करता है. ये बैक्टीरिया उसका जीन प्लांट में डाल देता है और उसको ट्यूमर्स करता है. ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड बोलते हैं. एंड आरआई प्लाज्मिड, तो ये ऑब्टेन फ्रॉम आर्गोबैक्टीरियम राइजोजेंस. सो ये क्या करेगा? हेरी रूट डिसीज करेगा प्लांट को. तो इनको यूज करके, इनको ऐसा यूज किया कि वेक्टर बोल के यूज किया. सो उनका बैड प्रॉपर्टीज रिमूव किया. सो प्रॉपर्टीज ऑफ टी आई आर प्लाज्मिड, सो दे डू नॉट कॉज डिसीज बिकॉज ऑफ रिमूवल ऑफ डिसीज कॉजिंग जीन्स. तो ये जो ए आर आई टी है उसका डिसीज कॉजिंग जीन्स रिमूव कर दिया, बस बाकी का काम का रखा है. काम का क्या है कि दे विल गो इन द प्लांट एंड दे विल मल्टीप्लाई एक्सट्रैक्ट्स. दे हैव साइट फॉर इंसर्शन ऑफ फॉरेन जीन्स, दैट इज जीन ऑफ इंटरेस्ट. दे आल्सो हैव सिलेक्टेबल मार्कर्स. सो याद रखो एनिमल वेक्टर्स कौन से, प्लांट वेक्टर कौन से, आइडियल प्रॉपर्टीज क्या है. नाउ एप्लीकेशंस ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी, applications of recombinant DNA technology. First one is the production of insulin. तो उसके लिए यूज करते हैं PBR 322 वेक्टर. प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यू यूज PBR 322 वेक्टर्स. PBR वेक्टर यूज करेंगे. नाउ DNA सीक्वेंस रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, चेन A एंड चेन B. तो इंसुलिन बनाने के लिए जो DNA लगता है उसको आइसोलेट करेंगे. सो इंसुलिन प्रोडक्शन DNA इज आइसोलेटेड, it is in the lab, and then after that this DNA is transferred into vector cell at the specific site known as a beta galactosidase. Beta galactosidase gene of the bacteria. Now vector is transferred into host cell of E. coli and allowed to express. Bacterial cells are isolated, ruptured, and two separate chains of insulin are recorded. And then in the lab, chain A and chain B, they are joined together by disulfide bond, and you get an insulin that is known as a recombinant insulin. Now in the similar way, somatostatin, then somatostropin, growth hormone, and other proteins of interest, they are produced. Now interferon means it is known as antibodies, viral antibodies. तो बैक्टीरिया के अगेंस्ट में जो प्रोटीन बनता है उसको बोलते हैं एंटीबॉडी. वायरस के अगेंस्ट में जो प्रोटीन बनता है उसको बोलते हैं इंटरफेरॉन. Well, so they are the interferon, they are the antibodies produced against the viral infection. There are three kind of interferon: alpha, beta, and gamma interferon. यहाँ पे ये क्या रखो, alpha interferon, beta interferon, and gamma interferon. They have various applications in the cancer and viral diseases. Now monoclonal antibodies. तो जो आपके बॉडी में वायरस के अगेंस्ट में या फिर बैक्टीरिया के अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी बनता है, जो प्रोटीन बनता है, so that is a polyclonal. So normally after infection, whatever antibodies they are produced upon the against the response of that antigen, so they are polyclonal, and they lack the specificity. So monoclonal antibodies, they are very high specificity. Monoclonal antibodies, they are prepared by, or they are produced by the combination of
myeloma cells of the bones and antibodies of isolated from previously immunized animal spleen cell. तो इसमें एक आपको इजीली बोलता हूँ मैं आपको कैसे होता है. तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज. तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कैसे बनाते हैं? पहले तो क्या करो, जिसका भी एंटीबॉडी आपको बनाना है, जैसे मान लीजिए कि आपने माइस ले लिया, माइस को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन कर दिया, तो माइस क्या करेगा, उसके बॉडी में एंटीबॉडीज बनेंगे. ओके, उसके स्प्लीन के सेल में स्टोर हो जाएंगे. सो यू हैव टू आइसोलेट द spleen cell, then you have to, this is known as an antibody, and then you have to isolate the myeloma cell. You have to isolate the myeloma cells. Myeloma cells means cancerous cells. Myeloma cells of bones. ये cancerous cells और ये spleen cells दोनों को फ्यूज करके monoclonal antibody बनता है. So normally after infection, whatever antibodies are produced, that is a polyclonal in nature and do not have characteristic specificity. So monoclonal antibodies produced from combination of myeloma cells from the bones and antibodies isolated from previously immunized animal spleens. So by fusing, that is a monoclonal antibody. Now hybridoma technology is used for the production of monoclonal antibody. Question is hybridoma technology is used to produce the monoclonal